Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 23 of the course Object Oriented Programming. In the previous lecture, we have seen the example program that uses a copy initialization, that is a copy constructor and assignment operator is overloaded for that class. और इसमें हमने string class को देखा था जिसमें हमने copy constructor भी की definition भी लिखी थी, and we have also overload the assignment operator for the string class. Why we overload assignment operator? Because the string class assignment has to do more than just assigning one string to another string. Okay? So what is that more thing? That more thing is that before assigning the string value to the string object on the left side, it will check that left side string object is pointing to an array of character, and it will check if there is any other string object that is pointing to the same array of character that is pointed by the object on the left side of the assignment. Then it will not delete that array of character if no other object, or we can say if the object that is on the left side of the assignment operation is the only object that is pointing to the array of character, then we have to delete that array of character. In today's lecture, we will start with that efficient string class, and the problem with that efficient string class is we have to resolve the problem, that is while deleting the string object it has to check whether there is any other string object pointing to the array of character or not. इसको हम डिटेल से देखेंगे आज के लेक्चर में, and then we will come to the dynamic type information. So it's more efficient. So we have seen in the last lecture that we have a string class, and that string class contains a pointer. That pointer points to a array of character, right? And then we will start we should count that how many string object point to the same array of character, right? Because if we delete any string object, it will also delete that array of character that is being pointed by other string object. Then in that case, the other objects points to the memory location where there will be no array of character, and that is the problem. And to solve that problem, we introduce a count class. To solve that problem, we introduce a count class that lie in between the string class and the array of character. So each object of this class, that is the count class, which we call str count, contains a count and also a pointer to a string. So ये हमने previous lecture में भी काफ़ी डिटेल से देखा था इसको. Let's start with that कि वो जो string count class है उसमें एक count होगा और एक pointer होगा. That pointer is a character pointer. That pointer points to an array of character. So that is a string. We create an object of a string, hello world. String constructor call हुआ, it calls the str constructor, str count constructor, s3 object create होगा, string count object create हुआ, and it will point to hello world, right? और यहाँ पे count की value 1 हो जाएगी. The other statement is display. So वो display में hello world display कर देंगे, और string count का जो memory address है that will be displayed. Let's say that address is 7550. Then we create another object s1. Now default constructor will be called, so null से initialize कर देगा string को, so ये null से initialize हो जाएगी. Now the next statement is the assignment, right? So we have an overloaded assignment operator, right? Now it will check, the first thing it will check PCS. So PCS इसमें s1 का PCS है because s1 is the invoking object that invoke operator equal function, right? So it will check if the value of the count is 1, then this means that s1 is the only object that is pointing to this string, this null string, right? So before assigning new value to s1, we have to delete this str count and this string, right? Why we want to delete? Because the value of count is 1. This means that s1 is the only object that is pointing to that null string. So we have to delete this string. Then constructor will be called, it will delete that string array of characters, and then that object will be deleted, right? And then the values are copied, s dot
pcs s, so s3 जो ऑब्जेक्ट है इसका रेफरेंस पास होगा, so s.pcs is basically s3.pcs. now s1 is pointing to the string count object जिसको s3 पॉइंट कर रहा था. then जब आप इसको डिस्प्ले करेंगे that value will be displayed, the same value will be displayed, hello world और एड्रेस उसका 7550 एड्रेस डिस्प्ले होगा. then the copy constructor will be called, right? so in that case it will create an object s2 and initialize s2's pcs, that is a pointer with s.pcs. ठीक है, so s3 पास होगा as a parameter to that function, s3 का रेफरेंस पास होगा यहाँ पर, so s.pcs is basically s3.pcs और ये कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा. s2 ऑब्जेक्ट भी सेम स्ट्रिंग काउंट के उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा जिसको s3 पॉइंट कर रहा था और काउंट की वैल्यू को भी इंक्रीमेंट कर दी जाएगा, 3 हो जाएगी. नाउ व्हेन यू डिस्प्ले s2 इट विल डिस्प्ले द सेम स्ट्रिंग दैट इज हेलो वर्ल्ड एंड द एड्रेस ऑफ द स्ट्रिंग काउंट ऑब्जेक्ट इज 7550. इसके प्रोग्राम को हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. So why must the assignment operator in the string worry about deletion, right? Because if we have an object s2, s1 and s2 is pointing to a string count, s1 is pointing to a string count object, right? And count is 1. so string count का जो s2 जिस string count को point कर रहा है उसके पास जो character pointer है उसके पास एड्रेस 650 है and 650 एड्रेस पे हमारे पास एक string है hello world. so यहाँ पर जो एड्रेसेस मैं assume कर रहा हूँ 7550 या 650 या 8750, so these are the integer values just to आसानी के लिए. अगर ये हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है तो उसको अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होती है, सो मैंने अज्यूम कर लिया कि इंटीजर में एड्रेसेस हैं हमारे पास. ठीक है, सो अदरवाइज एड्रेसेस जब भी अगर आप प्रिंट करेंगे तो भी दिया वो प्रिंट जब होंगे तो हेक्साडेसिमल में आप उनको प्रिंट कर सकते हैं, आप उनको इंटीजर में भी प्रिंट कर सकते हैं, राइट? सो दीज आर द जस्ट द अज्यूम्ड एड्रेसेस, राइट? सपोज दैट दीज आर द एड्रेसेस. ओके, नाउ s2 ऑब्जेक्ट, so अब user के लिए s2 object is pointing to a string hello world, right? but user don't know this string count, this middle object, right? now s1 object है, s1 object जिस string count object को point कर रहा है उसके पास जो character point है उसमें value 975 है और 975 पे हमारे पास जो string है that is good morning, right? now we have another object s3 that is pointing to a string count, right? now the value of count will become 2, right? so good morning string को for user good morning string को दो string के object point कर रहे हैं s1 and s3 and hello world string को एक string का object point कर रहा है s2, right? suppose we want to execute this statement s1 is equal to s3. हम s1 में भी s1 को भी point करवाना चाह रहे हैं उसी string को जिसको s2 point कर रहा है, right? so if we do that what happens is it will execute the operator equal function, that is overloaded operator assignment operator function को execute करेगा. it will first check कि s1 का जो psc है उसकी count की value 1 है, अगर 1 नहीं है तो it won't delete string count object, it just decrement the value of count और वो s1 की pcs को assign कर देगा s2 का pcs की value. so count डिक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा and ये जो एड्रेस है that is 7550. now s1 points to the string count object जिसको s2 point कर रहा है, right? now if you print the value of s1 it will print hello world. next statement is s3 is equal to s1. now it will check s3's pcs count, that value is 1, so this means that s3 is the only object that is pointing to good morning string. now the value of count becomes 0, the address is changed, s3 का pcs का एड्रेस चेंज हो जाएगा और इसके बाद ये जो string count है इसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और जब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा ये ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा और इसकी डिस्ट्रक्टर की डेफिनेशन में we are deleting array of character that is good morning because there is no string object pointing to that string anymore, right? so that is why the assignment operator function should worry about when to delete a string count or when to delete that array of character or object of a string, right?
So string object on the left side of the equal sign, that is S1 is equal to S3, was pointing at some string count object. Let's call it old string count before the assignment. So S1 point कर रहा था string count के किसी object को, let's call it old string count, and after the assignment S1 will be pointing to the object on the right side of the equal sign. If there are no string object pointing to the old string count, it should be deleted. This is what we have seen in the previous slide. Now a little bit comparison about the assignment operator and the copy constructor, that is copy initialization. So we have a string object S3 एक object है string class का, S2 one object है string class का, it is pointing to string count object, इसकी count की value 1 है. This means that ये जो string है, when the fox reaches इस string को S3 ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग क्लास का पॉइंट कर रहा है और नल स्ट्रिंग को S1 ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग क्लास का पॉइंट कर रहा है, राइट. सो दिस इज बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ S1 is equal to S2, right. When S1 is equal to S2 is executed, the situation is like this. This object will be deleted. ये delete हो जाएगा string count का object because count की value 1 है, and now S1 is pointing to string count object को point करेगा जिसको S3 point कर रहा था. So that is the assignment operator, right. Now here we have S3 object that is pointing to this string when the fox reaches, and this is before the execution of S2. And when we execute this statement, string S2 is equal to S3, then it will create S2 object, and that object will point, or it's that object's PCS pointer is initialized with the same value as contained by S3's PCS, right. इसका मतलब है कि S2 object भी इसी string count को point कर रहा होगा. That is called copy initialization, the creation of a new object, and it will point to the same string as pointed by S3 object. Now let's again look at this pointer. The member function of every object have access to a sort of magic pointer named this, which points to the object itself. So हम जब भी ये कहते हैं कि class किसी भी object के invoking object के member function, invoking object जब भी किसी member function को invoke करेगा तो invoking object के private data member, they are directly accessible in that member function. Why they are directly accessible? Because implicitly compiler एक पॉइंटर बनाता है जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे किसी भी क्लास का, a pointer to that object is created and that pointer is called this pointer, ठीक है. सो डिस्टेंस क्लास के आपने D1, D2, D3 3 ऑब्जेक्ट्स बना लिए. ना उसके लिए 3 डिफरेंट पॉइंटर्स क्रिएट हो जाएंगे and the name of that pointer is this pointer, right. So when you invoke any member function of a distance class with any of the distance object, then this pointer is passed to that function by the compiler implicitly. और compiler जो है इसको implicitly use कर रहा होगा to access the member of that object, data member of that object. Thus any member function can find out the address of the object which it is a member. Example. Now this is an example. So we have a class where that has a data member character array whose size is 10, type is character. Now we have one public function that is reveal and that says my object's address is this. So we created 3 objects, w1, w2, w3, and we call the function reveal 3 times. Now यहाँ पर जो addresses print होंगे they are the different addresses. Why? Because this pointer की value हर object के लिए different होगी. Right? So these are the different addresses. Accessing data member with this. So we have same class word, right? And we have a function tester. Now the member function alpha. So we have a pointer that points to an object of what class type, WH80, and with this and arrow operator you reach at that memory location जहाँ पर आपके पास what type का object है, and then you access the alpha data member of that object and assign the value 11 to it, and then you can print that value using the this operator. अगर आप this use नहीं करेंगे, आप simple लिखेंगे alpha is equal to 11 and cout में just alpha लिख देंगे, that works perfectly fine because implicitly
C जो है this यूज करेगा इसके साथ, और अगर आप यूज कर लेंगे फिर वो यूज नहीं करेगा. So in the main function we create an object W and then we call a function W dot tester. So ये फंक्शन टेस्टर फंक्शन इन्वोक हुआ किस ऑब्जेक्ट के साथ, W ऑब्जेक्ट के साथ. So now this pointer is implicitly passed to the tester function and this pointer contains the address where the memory for the W for this object W object is allocated, and using this pointer you go to that memory location, this arrow, and you access the data member alpha and then you assign the value 11 and then you print that value. So 11 यहाँ पे print हो जाएगा हमारे पास. Using this for returning values, this pointer can be used to return values. For example हमारे पास एक operator है, operator equal का function हमने overload किया and here we are returning the alpha class object by reference. उस object का reference return कर रहे हैं, right? Now this is the reference of the invoking object. ये invoking object का reference return करेगा. So A1 ऑब्जेक्ट को इसने इनिशियलाइज कर दिया है, सॉरी A1 ऑब्जेक्ट जो है इसको इनिशियलाइज कर दिया 37 के साथ. A2 ऑब्जेक्ट, A3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, देन we have a statement A3 is equal to A2 is equal to A1. So first it will execute A2 is equal to A3. अब ये जब इन्वोक होगा, now A2 become the invoking object, right? A2 become the invoking object बन जाएगा, और A1 will be passed to that function as a parameter. So A1 का data जो है A dot data, that is A1 का data basically that is assigned to data and that data is basically A2's data, right? जो invoking object है, because उसका जो private data member है invoking object का, that is directly accessible in the member function. And how that is directly accessible? Because whenever an invoking object invoke a member function, a pointer to that invoking object is passed to that function by the compiler, right? So compiler उसको pass कर देगा, and that pointer, the name of that pointer is this point. Now the compiler uses this arrow data to access the private data member, ठीक है? So आपने अगर data सिर्फ लिख दिया तो वो this arrow data वो खुद से लिख देगा, right? And then it can access, और अब A1 के data की value is assigned to A2's data, right? And then you print a message, assignment operator invoked, and return static this. Now what is this static this? If you return this, then that is the pointer. ठीक है, आपने pointer का reference return नहीं करना. You have to return the reference of the object. Object कहाँ पर पड़ा है? Static this पे, when you dereference that pointer. So that is very important point to remember. So अगर आप इसको return this कर देंगे, then this means that आप उस pointer का reference return कर रहे हैं, this pointer का reference return कर रहे हैं. Then यहाँ पर आपके पास alpha नहीं होना चाहिए था, ठीक है? Now you have to return object reference of an object. So यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए था? static this होना चाहिए था, because this में address है. address किसका है? object के. So उस address पे जाके और उस object को return करना है, right? उस memory location पे जो object पड़ा है उसको return करना है. So if we write static this, then this means that value at address, जो भी this के पास address है, value at that address. यहाँ पर उसकी मुराद ये होगी. So return value at address this. So value क्या है? वो एक object है. किस टाइप का? alpha टाइप का. And we are returning that object by reference here, right? तो उसका हम एक reference return कर रहे हैं like this. And का sign भी यहाँ पर है. That is referenced. Now that reference will come over here. ठीक है? So अब हमारे पास statement क्या बन जाएगी? A3 is equal to reference of alpha object. ठीक है? And that reference is basically the reference of A2 object. A2 जो object है उसका reference return होगा. Now the statement becomes A3 is equal to A2, right? So A3 इसमें invoking object होगा, और A2 का जो reference है that is the object that will pass as a parameter to this function by reference, and फिर इसके बाद ये function execute होगा. So ये जो statement है हमने इस तरह से 3 times जो लिखा है assignment में, A3 is equal to A2 is equal to A1, 3 operands को use किया है. That is possible because because our overloaded equal function returns an alpha object by reference. So that is using this pointer for returning values. This one important thing is be aware of the self assignment. And what is self assignment?
Okay, Murphy law states that whatever is possible, someone will eventually do it, right? So you have to take care of all the things by yourself. So this is certainly true in programming. So you can expect that if you have overloaded the equal operator, someone will use it to set an object equal to itself, like this statement. So S1 is equal to S1, right? So that is called a self-assignment. Why you have to be aware of that? Because the code for the assignment operator deletes the string count object if it thinks that the object that call it is the only object using string count. So for example, S1 object एक string को point कर रहा था hello world को, और सिर्फ S1 object ही hello world string को point कर रहा और कोई object नहीं कर रहा, right? Count की value क्या होगी? Because जब भी ये equal का ऑपरेटर आएगा इस तरह string class के ऑपरेटर के साथ, तो ऑपरेटर equal का function execute होगा. There it first checks the value of the count. If the value of the count is 1, then it thinks that that is this object on the left side is the only object that is pointing to hello world string. So what it will do, it will delete the string count and that hello world string. So जब delete कर देगा तो अब आप किस तरह से assign करेंगे S1 की value S2 को, right? So that is the problem, and that for that you have to be aware. ठीक है, क्योंकि कोई भी यूजर, कोई भी प्रोग्रामर सेल्फ असाइनमेंट भी कर सकता है. Now अगर फिगर के फॉर्म में देखें, so we have an object S1, so जो एक ही स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है. Now value of count here is 1. यहाँ काउंट की वैल्यू क्या है? 1 काउंट की वैल्यू है. This means that S1 is pointing to a string hello world, only object that is pointing to string hello world, right? And if we execute S1 is equal to S1, हम अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करें तो अब ऑपरेटर इक्वल का फंक्शन क्या करेगा? उसमें पहली चीज़ जो चेक हो रही है दैट इज द इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट का जो PCS है, बिकॉज इस इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट की PCS की वैल्यू चेंज होनी है ना, ठीक है. सो इसका जो PCS है उसमें आप जाके उसके एड्रेस में जाके यू हैव टू चेक द वैल्यू ऑफ द काउंट ऑफ द स्ट्रिंग काउंट ऑब्जेक्ट, बिकॉज अगर वो काउंट की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब है देयर आर सम अदर ऑब्जेक्ट दैट आर पॉइंटिंग टू द हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग, एंड इफ इट इज नॉट ग्रेटर देन दिस मीन्स दैट if it is equal to 1, this means that S1 is the only object that is pointing to hello world string. So in that case, that is shown in the figure in the slide is where the value of the count is 1. So this means that S1 is the only object that is pointing to the hello world string. So in that case, what it does is it will delete this string count object and this hello world string. So it will delete this string and delete the hello world string, right? And now it has to execute the assignment. Now S1 जो एज ए पैरामीटर पास हुआ है, ये ऑब्जेक्ट s.pcs या s.arrow.pcs को एक्सेस करेगा, and that is nothing, right? There is no string count object at that memory location. To fix this, because if you do something like this, your program hangs up or you're shut down by the operating system. So to fix this, self-assignment should be checked at the start of any overloaded assignment operator. किसी भी क्लास में if you write assignment operator overloaded function, then you have to check for the self assignment, right? Why you have to check the self assignment in that particular case string class? और जब इस तरह से ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएंगे तो प्रोग्राम क्यों शट डाउन हो जाएगा? We will see this in detail when I show you the same program in dev C, right? So this is how we can check. So if this is equal to and s, so and s is the address of the object of a string class that is passed by parameter to this function operator equal function को as a parameter pass हुआ है, and this is the invoking object address. So if both addresses are same, this means that there is a self assignment and you can return static this, right? Let's go to the program. That is the program. Okay, so this is the copy constructor passed by reference. Why we need to pass by reference in the copy constructor? Because if we pass by value, so whenever we pass any object by value to any function, copy constructor will be invoked. So यहाँ पर pass by value अगर होता तो copy constructor दोबारा से invoke हो जाता, फिर दोबारा से pass by value होता, दोबारा से invoke हो जाता है, and this process will continue up to infinite number of times. Okay, now let's compile and run this program. Let me change the screen size.
Okay, now s3 is equal to hello world. The address is the same, right? This is what we have seen previously. Now what I am doing here is, so let me comment out and do some kind of self assignment. So we have an object s3, so I say s3 is equal to s3. Now let's see what happened. Okay, so the program crashes immediately. Okay, so suddenly the program crashes. To fix this problem, we have to check in here in the overloaded function if there is any kind of self assignment or not. Alpha A, so it returns object reference. So अगर वो वही ऑब्जेक्ट है जिसको आप असाइन करना चाह रहे हैं, जिसकी वैल्यू को असाइन करना चाह रहे हैं लेफ्ट साइड के ऑब्जेक्ट में, तो बोथ आर द सेम ऑब्जेक्ट, देन दिस कंडीशन इज ट्रू in the if statement, and this statement will be executed. It returns the same object by reference. ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करें. So the name of class is, there's no alpha class actually, so that is a string class. I'm sorry. So this is a string class object, right? Compile and execute. So it states the message s3 is equal to hello world, and that is the address. So there is no error now because we incorporate और self assignment. So हमारे पास self assignment के लिए हमने एक precautionary measure कर लिया है. So that's why there is no error. Now another important topic is the dynamic type information, that is getting the type of the object or the class object type of the object at the runtime during the execution of the program. So it is possible to find out below information objects class, object कोई भी किसी particular class का, and even change the class of an object. किसी क्लास ऑब्जेक्ट की क्लास को भी चेंज किया जा सकता है. That is usually called dynamic type information. So such capabilities are used in situations where a variety of classes are descended from a base class. So इसकी कंडीशन क्या है कि एक सिंगल क्लास से सारी क्लासेस ड्राइव हो रही हों, ठीक है. And for dynamic class to work, the base class must be polymorphic. That is, there is at least one virtual function. If it is not pure virtual function, that is perfectly fine. So there should be at least one virtual function in the base class. ठीक है, एक virtual function base class में होना चाहिए, and that is called a polymorphic behavior. ठीक है. And the other thing is the inheritance. So एक single class, एक single base class से तमाम classes inherit हुई हों, right? And inheritance could be in hierarchy, right? So to achieve such capabilities, we will see two mechanisms. And what are those two mechanisms? The first one is the dynamic cast operator. The second one is the type ID. We will see the detail of these two operators, and we will see the program how to use these operators in our programs. Now let's see the class type of an object using dynamic cast, how we can use dynamic cast operator. So suppose some other program sends your program an object, and then your program suppose that this object should be of particular type. ये किसी particular class का object होगा. So it's supposed to be of certain type of an object, but you want to check it to be sure, right? So आप उसको check करना चाह रहे हैं क्या वो वाकई distance class का object है, क्या वो वाकई किसी drive 1 class का object है, ठीक है, before processing that object further. So how can you tell if an object is of a certain type or not, right? So dynamic cast operator provides a way to check
at runtime the type or the class of an object, and the condition is that the classes whose objects you want to check all are descended from a single base class, from a common ancestor. So हमारे पास एक base class होगी, multiple classes हैं जो inherit हो रही हैं, उनकी multiple hierarchies आ रही हैं. So whatever, अब हम we can have an array of pointer of type base class that can point to any of the drive class object, right? So इस केस में we can check कि जिस बेस क्लास, जिस ड्राइव क्लास को बेस क्लास का पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, whether that object is belongs to or whether that object is of a drive class 1, drive class 2 or drive class 3 and so on. Example program. So we have a base class, so that is a base class that contains a virtual function, and that virtual function is there for the polymorphic behavior of that class, right? And we have a drive 1 class and drive 2 class that is inherited publicly from a base class, inherited publicly from a base class. And then we have a function is drive 1, is derv1, that is we are checking that the object, address of the object we are passing to that function, whether that object is drive 1 object or not, right? Return type of this function is bool, and that function is not the member function of any of the class. ठीक है, वो एक function है, member function नहीं है. From the main we can call this function. Okay, now base class का जो pointer है will pass that pointer to that function. It creates a pointer of a drive 1 class, and then it will check drive 1 is equal to dynamic cast p unknown. So it will try to convert that p unknown into drive 1, right? And if it successfully convert that object p unknown of a pointer that points to the memory address, if it successfully convert that pointer into the p drive 1 pointer, then this means that p unknown pointer जो है वो एक ऐसी मेमोरी को पॉइंट करता है जहाँ पर हमारे पास drive 1 का ऑब्जेक्ट है, drv1 का ऑब्जेक्ट है. अगर हमारे पास उस मेमोरी लोकेशन पर जिसको p unknown पॉइंट कर रहा था, if we have an object of drv2 class, then that conversion will return 0. This means that this conversion is not performed successfully. So p unknown को वो कन्वर्ट करता है drv1 में और असाइन करता है p drive 1 को, right? So in case it returns 1, this means that conversion is successful, and p unknown जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है वहाँ पर हमारे पास drive 1 टाइप का ऑब्जेक्ट है, and then it returns true, otherwise it will return false, right? So that is a new thing over here, and this means that it will convert p unknown object pointer जो कि drive 1 या drive 2 ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा, जो कि बेसिकली बेस क्लास टाइप का पॉइंटर है p unknown, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा drive 1 में, drv1 में, right? So drv1 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, and if it convert it successfully, okay, using dynamic cast operator it try to convert p unknown into drv1 object. If it converts successfully, then it will return 1, otherwise it returns 0. ठीक है, so अगर ये 0 रिटर्न करेगा, this means that false, so it will return false. If it returns 1, then it returns, this function returns true, right? So true के केस में इसका मतलब है कि p unknown pointer एक ऐसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था where we have an object of p drive class. Let's go to the example program and see the program in detail. Now this is a program. So that is needed for the dynamic casting. Virtual function को होना चाहिए, और drive 1 है, drive 2 है, right? So we create two objects, d1 and d2. d1 is an object of drive 1 class, d2 is an object of drive 2 class, and we have a function is derv1. So if is drive d1 इसको ऑब्जेक्ट हमने पास कर दिया, d1 ऑब्जेक्ट जब पास होगा, इसको d1 एक पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है drv1 ऑब्जेक्ट को,
राइट। तो ये जो पॉइंटर हम यहाँ पे पास करेंगे और यहाँ पर हम इसको ले रहे हैं एज अ बेस पॉइंटर, बेस क्लास का पॉइंटर है, ठीक है। सो द टाइप, सो दैट इज अननोन फॉर द, दैट इज अननोन कि ये किस क्लास, किस ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। सो ये D1 कैन पॉइंट to DRV1 object, or we can say ये जो P unknown pointer है, that pointer can point to DRV1 object and DRV2 object, किसी भी object को point कर सकता है। So यहाँ पर तो हमने खुद से लिख दिया, but there are some situations जिसमें हमें मालूम नहीं है, and we want to know whether this object is a DRV1 object or DRV2 object, right? So ये जब पॉइंटर यहाँ पे पास करेंगे, कॉपी विल बी द वैल्यू विल बी कॉपी इन P unknown, और P unknown पॉइंट्स टू अ मेमोरी लोकेशन जहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है DRV1 का, ठीक है। ये तो अभी हमें पता है, इसलिए दैट इज़ वेरी क्लियर। बट अगर पता नहीं भी होगा फिर भी ये फंक्शन इस ड्राइव1 बता देगा कि वो ऑब्जेक्ट किस क्लास से है, वो ऑब्जेक्ट उस क्लास से बिलोंग कर रहा है या उस क्लास का ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ठीक है। देन P unknown, dynamic cast operator try to convert P unknown into drive1, ठीक है। उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा और असाइन करेगा P drive1 को। अगर तो कन्वर्जन सक्सेसफुल हुई, किस केस में सक्सेसफुल होगी? अगर P unknown ऐसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा होगा या P unknown के पास एक ऐसी मेमोरी का एड्रेस आ जाएगा एट द कॉल टाइम जिस मेमोरी पर एक DRV1 का क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, उस सूरत में ये 1 रिटर्न करेगा एंड दैट फंक्शन देन रिटर्न्स ट्रू। कंडीशन इन इफ इज ट्रू देन दैट फंक्शन रिटर्न्स ट्रू। अगर P unknown एक ऐसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है जहां पर हमारे पास ड्राइव 2 का ऑब्जेक्ट है, देन उस सूरत में ये कन्वर्जन सक्सेसफुल नहीं होगी, दैट विल रिटर्न 0। सो इफ 0 मीन्स इफ फॉल्स एंड इट विल रिटर्न दिस फॉल्स, राइट। सो यहाँ पर इस केस में हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ डिस्प्ले होगी दैट इज D1 इज अ मेंबर ऑफ DRV1 क्लास, and then we are checking DRV2. Here it will display the message D2 is not a member of DRV1 class, right? Let's compile this program first and execute it. Change the screen size 50. So these all lectures are from polymorphism से start होकर onward, तमाम के तमाम lectures जो हैं वो रॉबर्ट लेफोर की बुक से हैं। Now display the message D1 is a member of drive1 class and D2 is a member of drive2 class, right? And D2 is not a member of drive2 class, ठीक है जी। So for example, if we create another class drive3 inherited, so let's say that class is inherited from DERP1, type of the inheritance is public. So let's check out if we have a multiple hierarchy. If we create an object of drive3, static D3 is equal to new DERV3 semicolon. If is DERV3 D3 इसको पास कर रहे हैं, if it is just display the message, this message control C, control V, D3 is the member of drive3, so that is further in the hierarchy, ठीक है। so hierarchy क्या बन रही है, drive3 जो है वो drive1 से है, drive क्लास है, और drive1 जो है बेस क्लास से drive क्लास है। now that is a drive3 function, let's say this is drive3 and that is also 3. now it tries to convert P unknown into drive3 type if the P unknown point to a memory जहाँ पर हमारे पास drive3 क्लास का ऑब्जेक्ट है, then
that conversion is successful and it will return 1 and that function will return true then. Let's compile it first. So is drive 3. That is the same. It's drive 3. I don't know what is the problem actually. Let's see. In function drive 3. Okay, so we forget to put semicolon over here, so that is the end of the class, right? Now it compiles successfully. Let's run it. And D3 is the member of drive 3 class, right? So you can use आप hierarchy में कहीं पर भी use कर सकते हैं, ठीक है इसे. But the only thing is that all the classes are derived from a single base class, और base class में हमारे पास एक virtual function होगा, right? Now अब हम देखते हैं कि how we can change the pointer type of the pointer using dynamic cast operator, right? So first thing जो हमने देखा था कि dynamic cast operator can be used to check कि a particular कोई object, that particular object belongs to a specific class or not. Now we can see that how we can change the type of the pointer using dynamic cast operator. So dynamic cast operator allows you to cast upward and downward in the inheritance tree. So upward means कि you are casting a drive class pointer to a base class pointer, you are moving up, and downward means कि आप base class के pointer को drive class के pointer में cast कर रहे हैं. That is a downward casting. So we have a base class. इसमें हमारे पास एक private data member है BA. Just remember it. There is one private data member in the base class, that is BA, and there is a constructor, default constructor, a constructor with a single argument and a virtual function, right? And then we have a show function. Show function क्या करेगा कि वो उसकी value display कर देगा जो private data member BA है base class का उसकी, right? अच्छा, base class में हमारे पास जो virtual function है, that is not the pure virtual function. So that means that we can create an object of a base class, right? Because that is not a pure virtual function. We have an empty bracket over here. So we write the definition bracket, but we haven't write any statement inside this word function, right? That is a virtual function, right? Now we have a drive class, DRV class, that is inherited from the base class. The type of inheritance is public, and the private data member of this drive class is DA. So base class का derived private data member जो data member है base class का, that is BA, and drive class का जो data member है DRV class का, that is DA. Okay, so in drive class we have a constructor with two argument, और वो दो argument का constructor जो है, what it will do is it will initialize. So वो DA की वैल्यू सेट कर देगा और BA की वैल्यू भी सेट कर देगा, बिकॉज जब भी आप ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसके जो डाटा मेंबर होंगे वो दो होंगे. एक तो उसने इनहेरिट किया हुआ है फ्रॉम द बेस क्लास, दैट इज BA डाटा मेंबर, और एक उसका अपना जो डाटा मेंबर है, दैट इज DA, राइट? और शो फंक्शन जो है इसका, इट डिस्प्लेज द वैल्यूज ऑफ BA एंड DA. सो वो लिखा होगा आपके पास ड्राइव कॉलन BA इज इक्वल टू BA एंड DA की वैल्यू लाइक दिस, राइट? Now base class का private data member BA and drive class का data member DA. Now let's look at the main function and execute the main function step by step and see what happens. Now this is a base function. In the first statement we create a pointer P base whose type is base. That means that this pointer points to a memory location where you can store a base type object. बेस टाइप के ऑब्जेक्ट कौन से होंगे? बेस क्लास के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, और बेस क्लास से जो भी क्लास ड्राइव होगी उस क्लास के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट्स दे आर आल्सो द ऑब्जेक्ट ऑफ अ बेस क्लास.
and the pointer takes only 4 byte in memory, ठीक है. So 32 bit addressing में 4 bytes pointer लेगा memory में. So when the first statement is executed, so this is allocated in the memory. So pointer के लिए 4 byte memory allocate हो गई है. This is the memory for the pointer, 4 bytes memory allocate हो गया है, and this contains the address where we have an object of a base class. ये base class का object है जिसका एक ही private data member है BA और उसकी value क्या है 10, ठीक है. So 10 value आपने यहाँ पे इसको initialize कर दिया है. So base class का single argument constructor call होगा, it creates a base class object और उसमें वो BA के जो data member है उसका BA उसको value को 10 से initialize कर देगा. Now in the second statement we create a pointer P drive whose type is drv drive type का pointer होगा. That means this pointer points to a memory location where you can store an object of a drive class. So new operator के through आपने drive class का object create किया, उसको 2 values pass कर दिए. So that memory is allocated. So for the drive class object उसके data member 2 होंगे, एक उसने inherit किया हुआ from the base class and the other data member is its own data member, that is DA. So BA is from the base class, DA is its own data member, and we initialize it with the value 21 and 22, right? So ये जो value आपने यहाँ पे लिखी थी. So this is the structure of the memory now. Okay, the next statement is now we use dynamic cast operator to convert P drive pointer into the P base pointer, ठीक है. So हम P drive को convert कर रहे हैं base type में, so that is upward conversion, right? So P drive को convert करें base type में using a dynamic cast operator and assign it to the P base. So P base pointer की value change हो जाएगी after executing this statement, and that value is, so जब ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, ये वाली जो मेन फंक्शन में जब ये एग्जीक्यूट होगी तो P base will point to this object, ठीक है. So इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा जो कि ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है, बिकॉज P ड्राइव के पास जो एड्रेस है उस एड्रेस पे हमारे पास ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है, DRV क्लास का ऑब्जेक्ट है, एंड उस एड्रेस को यू आर कन्वर्टिंग इट इनटू द बेस एंड असाइन इट टू द पॉइंटर P base. So इस P base के पास भी वही एड्रेस आ जाएगा जो कि P ड्राइव के पास एड्रेस है. नाउ इट पॉइंट्स टू द सेम मेमोरी लोकेशन, वो सेम मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है जिसको P ड्राइव पॉइंट कर रहा है. नाउ इफ यू एग्जीक्यूट अ फंक्शन P base arrow show, अगर आप ये शो का फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, नाउ द फंक्शन शो इन द बेस क्लास, इट इज़ नॉट अ वर्चुअल फंक्शन, नॉट अ प्योर वर्चुअल फंक्शन, इट इज़ अ ऑर्डिनरी मेंबर फंक्शन. सो इस केस में ये बेस क्लास का शो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, दैट इज द शो फंक्शन इन द बेस क्लास, and what it does is it will print the value of the base BA. So BA, so इस object drive class के object में से जो base class का part है that is BA, उसकी value को वो display कर देगा. So in the output it will display base colon BA is equal to 21. So इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि P ड्राइव जो पॉइंटर है ये पॉइंट नहीं कर सकता है इसको. अगर आप P ड्राइव के साथ इस टाइम पर यहाँ पर शो का फंक्शन कॉल करेंगे तो वो डिस्प्ले करेगा ड्राइव DRV ड्रिव कॉलन BA इज इक्वल टू 21, DA इज इक्वल टू 22. वाई वो 2 वैल्यूज़ क्यों प्रिंट करेगा, और बेस का जो पॉइंटर है जब उसके थ्रू हम एक्सेस करेंगे तो सिंगल वैल्यू प्रिंट क्यों करेगा, ठीक है. सो whenever you dereference a pointer, so अगर पॉइंटर एक मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर है, फॉर एग्जांपल वी हैव अ पॉइंटर जो इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, इट पॉइंट्स टू अ मेमोरी लोकेशन वेयर यू कैन स्टोर इंटीजर वैल्यू, राइट. सो द पॉइंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट बाइट. सो इंटीजर के लिए 4 बाइट एलोकेट हुए थे हमारे पास, बट द पॉइंटर कंटेन्स द फर्स्ट बाइट, एड्रेस ऑफ द फर्स्ट बाइट ऑफ दीज 4 बाइट्स, right? And whenever you dereference the pointer, for example you write static P, that is dereferencing a pointer. Now how the pointer knows that how many bytes it has to read from that memory location? It is the type of the pointer. वो pointer की type है, अगर integer type का pointer है तो वो उस जो एड्रेस जो P के पास है वहाँ से स्टार्ट करके 4 बाइट तक रीड करेगा, राइट. और अगर करेक्टर पॉइंटर है तो जस्ट 1 बाइट रीड करेगा. नाउ यहाँ पर जो पॉइंटर की टाइप है P बेस पॉइंटर की टाइप, दैट इज अ बेस पॉइंटर, राइट. सो बेस टाइप का पॉइंटर है,
राइट। सो ये जब इस मेमोरी लोकेशन को रीड करेगा, सो ये जस्ट बेस पार्ट को रीड करेगा, ठीक है। उस ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट से जो बेस पार्ट है उसको रीड करेगा। और ड्राइव क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, व्हाई इट रीड्स टू वैल्यू, बिकॉज इट इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास। सो बेस क्लास के जितने भी डाटा मेंबर हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट, राइट। प्लस जो ड्राइव क्लास के अपने डाटा मेंबर हैं, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट। सो वो दोनों को प्रिंट करेगा। सो जब आप पी ड्राइव के साथ शो का फंक्शन कॉल करेंगे, इट विल एक्सेस बी ए एंड डी ए एज वेल, बोथ, राइट। So I will show you in the dev C when we see this program. Then we create a new object. हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया ड्राइव का drv, उसकी वैल्यू 31 32 इनिशियलाइज किया और वो पॉइंटर असाइन कर दिया p बेस को। एंड दैट इज़ व्हाट वी कैन डू, कि हम बेस क्लास टाइप के पॉइंटर को ड्राइव क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट का एड्रेस असाइन कर सकते हैं, बिकॉज ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट दे आर कंसिडर एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ बेस क्लास। सो एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। नाउ द एड्रेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी असाइन टू p बेस। सो p बेस पॉइंटर नाउ पॉइंट्स टू दिस न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ अ ड्राइव क्लास हैविंग वैल्यू 31 and 32. एंड देन वी हैव अ स्टेटमेंट p base टाइप के पॉइंटर को वी आर कन्वर्टिंग दैट पॉइंटर into a drive pointer, right, and that is called a downward casting, right. So this is upward and this is downward. हम p base टाइप के पॉइंटर को टाइप कास्ट कर रहे हैं यूजिंग अ डायनेमिक कास्ट ऑपरेटर इनटू अ ड्राइव क्लास, और वो असाइन कर रहे हैं p ड्राइव को, पॉइंटर ड्राइव को, जो पॉइंटर है उसको असाइन कर रहे हैं, ठीक है। So इसका मतलब है कि जो p ड्राइव ऑब्जेक्ट है, दैट ऑब्जेक्ट करंटली पॉइंटिंग टू दिस मेमोरी लोकेशन आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है इसकी एग्जीक्यूशन के बाद नाउ p ड्राइव ऑब्जेक्ट विल पॉइंट टू दिस मेमोरी लोकेशन, ठीक है। बिकॉज p बेस के पास कौन सा एड्रेस था, p बेस के पास जो एड्रेस था दैट इज द एड्रेस ऑफ दिस न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर अगर आप p बेस के साथ शो का फंक्शन कॉल करेंगे तो यहाँ पर भी वो बी ए इज इक्वल टू 31 ही डिस्प्ले करेगा, वो डी ए को डिस्प्ले नहीं करेगा। बट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, दैट इज यू आर टाइप कास्टिंग द p बेस पॉइंटर इनटू द जो बेस टाइप का पॉइंटर है उसको आप ड्राइव क्लास टाइप में पॉइंटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ड्राइव टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं और असाइन कर रहे हैं p ड्राइव पॉइंटर को, p drv पॉइंटर को। नाउ दिस पॉइंटर p drive pointer points to this memory location. Now if you call a function p drive, show का function call करेंगे तो इस सूरत में वो दोनों values को display करेगा। So this is a show function of a drive class. So that function will be executed and it will display these two values. वो दोनों values को display करेगा, ठीक है। Okay, now let's go to the program and see more details of that program and execute it actually. So this is the base class, private data member BA है, drive class private data member DA है, right? Okay, show function दोनों का अपना function है and that is not virtual in the base class. So main function में हम आ गए हैं, यहाँ पर हम ये same operation ये apply कर रहे हैं। So यहाँ पर एक चीज़ देखें, अब हमने drive class का object बनाया, एड्रेस असाइन कर दिया p ड्राइव को, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एड्रेस असाइन कर दिया p बेस को। नाउ p ड्राइव जो पॉइंटर है, जो कि ड्राइव टाइप का पॉइंटर है, उसको कन्वर्ट किया बेस क्लास में एंड असाइन कर दिया p बेस को, राइट। एंड व्हेन वी कॉल द p बेस फंक्शन हियर एट दिस पॉइंट, p बेस के साथ जब शो का फंक्शन कॉल करेंगे देन इट विल डिस्प्ले ओनली वैल्यू b इज इक्वल टू 21। एंड व्हेन वी कॉल अ p show function with the p drive arrow show function, now it will display the value of BA and DA both, ठीक है। So p base और p drive दोनों पॉइंटर इस पॉइंट पर सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। Let's check out if it is true or not. Let me comment out these things and see out. Let's print the addresses. P V is equal to P DERV
okay, and p base is equal to p base. So let's see ये जो एड्रेसेस हैं ये सेम हैं या नहीं हैं. ठीक है, let's compile it. Let me explain once again that कि हमारे पास जो p ड्राइव पॉइंटर था PDERV, इसको हमने टाइप कास्ट किया बेस क्लास में और असाइन कर दिया p बेस को. नाउ p बेस और PDERV दोनों पॉइंटर सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करें और वो ऑब्जेक्ट है ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट. जब आप उसको बेस क्लास के पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करेंगे तो वो उस ऑब्जेक्ट का बेस पार्ट डिस्प्ले करेगा, दैट इज BA. ठीक है, जब आप इसको ड्राइव क्लास से क्यों बेस पार्ट प्रिंट करेगा, बिकॉज वो बेस क्लास का शो फंक्शन कॉल करेगा. एंड व्हेन यू एक्सेस दैट ऑब्जेक्ट यूजिंग अ ड्राइव क्लास पॉइंटर, तो उस सूरत में वो फिर दोनों वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा, वो बेस पार्ट को भी डिस्प्ले करेगा और ड्राइव पार्ट को भी डिस्प्ले करेगा. ठीक है, बिकॉज ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट जो है उस ऑब्जेक्ट का जो जितने भी बेस क्लास के डाटा मेंबर हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट. Now I write cout statement over here in order to check that whether the p base or p drive they have the same addresses or not. Compile it and run it. Let me change the screen size. 50 layout 4013. Okay, now you can see that बेस क्लास जब प्रिंट कर रहा है तो वो बेस क्लास पार्ट को प्रिंट करेगा BA को. जब ड्राइव क्लास के पॉइंटर के थ्रू प्रिंट करेंगे तो वो ड्राइव क्लास का शो फंक्शन कॉल करेगा, वो BA भी प्रिंट करेगा, DA भी प्रिंट करेगा. एंड P ड्राइव के पास जो एड्रेस है दैट इज दिस मेमोरी एड्रेस, एंड P बेस के पास जो एड्रेस है दैट इज दिस मेमोरी एड्रेस. तो दोनों के पास सेम मेमोरी एड्रेस है, दैट इज दोनों पॉइंटर सेम मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, और जिस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं वहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है दैट ऑब्जेक्ट इज अ ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट. Okay, now let's continue. So let me comment out these things. Okay, then we create a drive class pointer. ठीक है, हमने drive class pointer बनाया. अब हम और उसका एड्रेस असाइन कर दिया p base को, सॉरी drive class का ऑब्जेक्ट बनाया. न्यू ऑपरेटर के थ्रू उसको मेमोरी एलोकेट हुई है और उसका जो एड्रेस रिटर्न होगा, न्यू ऑपरेटर जो एड्रेस रिटर्न करेगा उस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद, दैट विल बी असाइंड टू p base. नाउ वी कन्वर्ट p base इनटू ड्राइव एंड असाइन इट टू द p ड्राइव. नाउ इस सूरत में जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो p ड्राइव को जब प्रिंट करेंगे, p ड्राइव के साथ जब आप शो का फंक्शन कॉल करेंगे, p ड्राइव एरो यू रीच टू दैट ऑब्जेक्ट जो कि जिसका एड्रेस PDERV के पास था. ठीक है, एंड देन यू कॉल अ शो फंक्शन विद दैट ऑब्जेक्ट, देन इट विल डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ DA एंड BA बोथ. ठीक है, बिकॉज उस मेमोरी लोकेशन पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था वो ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट था. राइट, सो लेट्स कंपाइल एंड एग्जीक्यूट इट. राइट, सो ड्राइव BA 31 and DA 32. Right, now there is one more question, that what if we create an object of a base class over here. Right, so what if I write p base is equal to new base and the value is let's say 50. So what happened now कि अगर p base जो पॉइंटर है वो बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट कर रहा है. राइट, and then we convert that pointer into drive class and assign it to p drive. Right, and then we call this show function with that object. Then it will call the show function of the drive class, और उस सूरत में हमारे पास एरर आ सकता है बिकॉज जब ड्राइव क्लास का शो फंक्शन कॉल होगा इट विल ट्राई टू एक्सेस दिस DA एज वेल. तो BA तो एक्सेस कर लेगा, तो DA जब एक्सेस करेगा इट ट्राई टू रीड द मेमोरी फर्दर, एंड let's see what happens. Maybe get an error. Yeah, okay, now it stopped working. So ये जो स्क्रीन हमारे पास आई है ये क्यों आई है? Because it tries to read the next 4 byte, right?
सो बेस क्लास के लिए जस्ट 4 बाइट मेमोरी एलोकेट हुई थी, वहाँ पर 21 वैल्यू स्टोर हो गई थी। बट जब हमने बेस क्लास के पॉइंटर को कन्वर्ट किया ड्राइव क्लास में एंड असाइन इट टू द ड्राइव क्लास पॉइंटर, सो अब ड्राइव क्लास पॉइंटर के साथ जब हमने शो का फंक्शन कॉल किया, नाउ इट एक्सपेक्ट कि वहाँ पर बेस क्लास का पार्ट भी होगा और ड्राइव क्लास का पार्ट भी होगा। सो इट प्रिंट्स द बेस क्लास पार्ट, और जब ड्राइव क्लास का पार्ट को प्रिंट करने के लिए इसने नेक्स्ट 4 बाइट को एक्सेस किया है, तो वो नेक्स्ट 4 बाइट मे बी दे आर द पार्ट ऑफ द सम अदर प्रोग्राम रनिंग अंडर द विंडोज सिस्टम, एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम मे बी वोंट अलाउ to go beyond the memory that is allocated for your program during the execution. So आपका प्रोग्राम जब रन होता है इसको मेमोरी एरिया एलोकेट हो जाता है। उससे बाहर, जब उसके बाहर से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे आप मेमोरी, तो उस सूरत में एरर आ जाएगा। एंड आई थिंक द सेम थिंग हैपन्स मे बी ओवर हेयर कि इट ट्राइज टू फैच the value from the other 4 bytes, from the next 4 bytes after the 21, and maybe that memory is the memory of the other program or the other process that is run by the Windows operating system, and that's why it gives this message. So we can just simply click on close the program, right? The other thing is the type ID. So dynamic cast operator को हमने चेक कर लिया. We can use dynamic cast operator to check the confirm the class of the object and to dynamically typecast the pointer of one class into the pointer of another class. ठीक है, एक class type से हम दूसरी class type पे convert कर सकते हैं, whether that conversion can be upward or downward, but it should be in the hierarchy कि उसमें हमारे पास एक base class होनी चाहिए and other classes are inherited from that base class. So the next thing is the type ID. Type ID operator is used to get more information about an object than just simple verification. So अभी तक हमने देखा था जो that is simple verification, कि आप वेरीफाई करते थे कि दैट ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर क्लास, ड्राइव 1 क्लास से, ड्राइव 2 क्लास से बिलोंग कर रही है, ड्राइव 3 से, या आप उसमें टाइप कन्वर्जन करते थे. सो टाइप आईडी प्रोवाइड्स सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट. So let's go to the program and simply see what type ID does. Okay, so we have the same class hierarchy. Base class हमारे पास है and drive 1 एक class है, drv2 class है, that is publicly inherited from the base class, right? And then we have a function, a general function, display name. So what we did is we pass a pointer to an object of base type to display name, and what that display name function does is it print the message pointer of an object of type ID within bracket that pointer static pb. Static pb means it goes to that memory location जहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा है बेस टाइप का. सो बेस टाइप का ऑब्जेक्ट मीन्स इट कुड बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ बेस क्लास और इट कुड बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ड्राइव drv1 क्लास, drv2 क्लास. एंड डॉट नेम, सो वी आर गेटिंग द नेम ऑफ दैट क्लास. हम उस ऑब्जेक्ट की क्लास नेम को एक्सेस कर रहे हैं, राइट. इन द मेन फंक्शन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, drv1 एक ऑब्जेक्ट बनाया, and that is also not a pure virtual function. Okay, we can create an object of a base class as well, and we will do it. So drv1 एक ऑब्जेक्ट बनाया, new operator के through assign के address pbase को, then we pass the pbase to display name. Now it will display the name drv1. It will display pointer to an object of drv1 class, right? So वो ये जो चीज़ है ये एक्सेस कर लेगी उस ऑब्जेक्ट का क्लास नेम स्टेटमेंट. Then we create an object of drv2 and pointed by this pointer, and it display that name. Now thirdly we create an object of a base class, right, and pass that pointer to that function that is pbase. Let's see what it displays, right? Now let's compile the program. So जहाँ पर वो first time वो display करेगा drv1, second time drv2, because ये जो pointer है जिस memory address को point कर रहा है, at that memory address we have an object of drv2, right?
देन वी क्रिएट अ बेस ऑब्जेक्ट, उसका एड्रेस हमने असाइन कर दिया पी बेस पॉइंटर में, पी बेस पॉइंटर पास किया टू द डिस्प्ले फंक्शन, डिस्प्ले नेम फंक्शन. नाउ इन दैट केस, इस केस में जब ये फंक्शन थर्ड टाइम कॉल होगा तो यहाँ पर जो जिस नेम डिस्प्ले करेगा दैट इज बेस, बिकॉज पी बेस जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी पे हमारे पास बेस टाइप का ऑब्जेक्ट मौजूद है, बेस ऑब्जेक्ट मौजूद है, बेस टाइप का ऑब्जेक्ट मौजूद है. नाउ लेट्स कंपाइल दिस प्रोग्राम. To change the screen setting. Okay, now first it prints pointer to an object of DRV1 class. This 5 means is the length of the character, ठीक है. So DERV1, 5 characters, so it prints 5. So second times we pass a pointer that points to DRV2 object, so it displays the class name DRV2, right? So if I change the name of the class over here, let's say this is DRVA and this is DRVB, DADB, and let's change the name over here, that is DA, that is DB. Now let's see what it prints. Compile it, close and execute it. Now it prints pointer to an object of DA class. So first time इसको DA class का हमने एक ऐसा पॉइंटर पास किया जो कि DA क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था. सेकेंड टाइम एक ऐसा पॉइंटर पास किया, वही पॉइंटर्स को DB ऑब्जेक्ट के पॉइंट करवा दिया. नेक्स्ट टाइम हमने उसे बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करा दिया. सो इट प्रिंट्स DA, DB एंड बेस. सो दिस this is the length of the class name, and this is also the length of the class name, right? So that is the function of a type ID, that you can also read the class name, and we will see the more function of a type ID when we are in the filing lectures. जब हम फाइलिंग देखेंगे इसमें तो हम इसमें मज़ीद इसके operations देखेंगे. So that is the end of our today's lecture. Thank you very much. Allah Hafiz.